आज खुश तो बहुत होंगे आप सब और होना भी चाहिए। इंतजार था बहुत समय से, सबको पता था कि बहुत प्रतिभा है शुभमन गिल में, लेकिन वो रन्स नहीं आ रहे थे, वो बड़े शतक नहीं आ रहे थे जिसकी आप उम्मीद करते हैं शुभमन गिल से। उन्होंने खुद ही ऐसे बड़े रन्स लगाकर बाकी दोनों फॉर्मेट्स में आदत खराब कर दी है अपने फैंस की, लेकिन जब वो रन्स आए तो क्या कमाल आए। सारी दुनिया ने देखा ये शतक और शायद सबसे ज्यादा आप उस शुभमन गिल के चेहरे पर भी देख सकते हैं आप वो जो कंफर्ट है, वो जो उन्हें पता है कि कितनी जरूरत थी उन रन्स की। और जैसा आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के जाने माने नामचीन लोग सब ने सराहना करी है शुभमन गिल की। सबको पता था, सबके जहन में इंतजार जरूर था कि ये शतक आएगा। कब आएगा सबसे बड़ा सवाल था, और आया दूसरी पारी में आया, तब जब अटकलें लग रही थी, तब जब सवाल उठ रहे थे कि नंबर 3 पर क्या शुभमन गिल की जगह आप किसी और विकल्प को ट्राई करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया है। शुभमन गिल ने खुद कोच राहुल द्रविड़ से मांगा था ये नंबर 3 का स्पॉट। लेकिन बात कुल मिला के ये है कि विशाखापट्टनम में भारतीय टीम लेवल करना चाह रही है सीरीज 1-0 से पीछे। आप देख रहे हैं फॉलो द ब्लूज लाइव, मेरा नाम तने तिवारी। सारी अपडेट्स लेकर आएंगे हम, जी हाँ, सब कुछ सड़सठ पर एक। इंग्लैंड 399 रनों का लक्ष्य है। बहुत सारी चर्चाएं करने के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट फॉलो द ब्लूज इनसाइडर सीनियर रिपोर्टर रोहन देशमुख, इंडिया एडिटर फॉर ESPN क्रिकेट इन्फो जॉर्ज बिनॉय। जेंटलमैन वेलकम। सबसे पहले तो it's only fair that we celebrate शुभमन गिल, and I'll begin with our FTB insider रोहन भाई। गुड न्यूज, फाइनली बहुत दिन हो गए थे वो रन्स नहीं आए थे, सबको पता था आने चाहिए, लेकिन अब आ गए हैं तो अच्छा लग रहा है। वेल एब्सोल्युटली तने। और कल ना मेरे 3 विश लिस्ट थे, जॉर्ज को पता है ये। विश लिस्ट ये थी कि रोहित शर्मा के बैट से रन आए, श्रेयस अय्यर के बैट से रन आए और शुभमन गिल के, एंड फाइनली शुभमन के तो आ गए। एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनिंग्स, क्योंकि सबसे पहले जब वो बैटिंग करने आए थे ना तो काफ़ी चांसेस जो है इंग्लैंड को थे। ही सर्वाइव्ड दैट LBW डिसीजन ऑल्सो अगेंस्ट जेम्स एंडरसन, जो कि अंपायर्स कॉल था। उसके बाद एक LBW दिया गया था उन्हें, विच टर्न्ड आउट टू बी इन हिज फेवर। एंड इट वॉज इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा अभी मैच के बाद भी कि ही वॉज नॉट श्योर कि वो डिसीजन रिव्यू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और श्रेयस अय्यर ने इनफैक्ट उनको कहा कि नहीं रिव्यू ले लेते। एंड यू कुड सी दैट स्माइल ऑन हिज फेस ना, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इनसाइड एज था। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग दैट आफ्टर दैट इंसिडेंट ऑल्सो देन देयर वाज दिस एज विच वेंट पास्ट द फर्स्ट स्लिप। सो ही वॉज राइडिंग ऑन हिज लक, और बहुत अच्छी बात है यार देखने को दैट ही वेंट थ्रू दैट वेरी चैलेंजिंग फेस, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कभी भी विकेट जा सकती है। एंड आफ्टर दैट ही गॉट हिज नर्व्स, ही सेटल्ड इन, एंड देन he went on to score that runs. And one of the best shots that actually I liked about his was the way he hit a shot of Rehan Ahmed down the wicket आके Rehan Ahmed को उन्होंने जो एक शॉट मारा था, it was fantastic to see him growing in his in the confidence. In fact अभी शाम होते होते जो है ना एक इंडियन एक्सप्रेस पे एक रिपोर्ट भी है कि शायद जो है टीम मैनेजमेंट में उन्हें अल्टीमेटम भी दिया था कि हो सकता है कि ये दिस कुड बी योर लास्ट इनिंग्स। वी डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज बिकॉज this report has just come in, but interesting to see, and that he was against the wall. He was under tremendous pressure, and fantastic innings. After all, we were expecting Shubman to do it, considering the kind of failures he had at number 3, and after so many innings he finally made it good. And someone like Kevin Peterson was also telling all of us, just be patient, thoda patient ho jaiye Shubman ke sath. Good to see a good 100 at a timely stage for India. He's a 24, George, and if you look at those numbers, it's right, it's true that those big scores that you expect from Shubman Gill haven't really come. Look at that. Now this is a number 3 spot. We heard from Rohit as well that he actually demanded that he wanted to bat at number 3 in Test crickets from Rahul Dravid. Rahul Dravid said, all right, it's yours. And then the scores dried up. They just didn't come. And especially if you look at the last 5 innings, 2, 26, 23, 0 and 34, it's not very hard to believe that report from the Indian Express, because there are other batters waiting on the outside wanting to get into. It's a very tough setup. This is a very, very crucial century, not only for Shubman Gill, but also from India's perspective of looking at Shubman Gill as a future prospect. Undoubtedly, he was under a lot of pressure going into this test and this innings. As you said, there are people waiting in the squad, and then when Rahul comes back and Kohli comes back, there's going to be all sorts of chatter as to who keeps their place in the team. So a very, very timely innings for Shubman Gill. As Rohan said, he had a lot of luck at the start of the innings. Sometimes you need
luck to go your way. But it was good that he battled through that phase and made it count, and see, normally when we've seen Shubman Gill reach his milestones, you see that signature bow that he does and Yeah. raises his bat. This time he was subdued, there was relief on his face when he got to first his 50. And then even once he got to his 100, there was no over the top celebration. Like it was just like a release of like a lot of maybe tension gone from him for now. He'll be a little bit disappointed he didn't go on to make it to Jaiswal. I'm going to call a double hundred now a Jaiswal for some time. But yeah, an invaluable innings, and really the difference again. I feel India again missed the opportunity to completely bat England out of this match, and Gill is the difference between them, chasing 250 and 400. Yeah. ये बहुत दिलचस्प बात है और इस पर हम और चर्चा करेंगे ज़रूर कि कैसे भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही है इस पूरे टेस्ट मैच और कैसे इंग्लैंड अभी भी वो जो बड़ा खतरा है 2-0 इंग्लैंड के आगे जाने का वो मंडरा रहा है। लेकिन उसके पहले शुभमन गिल कंसिस्टेंसी को कितना वैल्यू करते हैं, कितना जानते हैं और चाहते हैं कंसिस्टेंट रहे, हमने उनसे चर्चा करी थी वर्ल्ड कप के दौरान। आइए सुनते हैं। My biggest fear, I think, has been failure, and how did I overcome it? I think through experience. When you go through it, and when you see, it's nothing but just a fear of yours, then I think you're unstoppable. इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक बार जब आपको पता कि आपके रन हो रहे हैं तो उस पीरियड पे या उस टाइम पे आप विकेट थ्रो ना करें, क्योंकि बहुत इजी होता है जब बैट पे बॉल अच्छी लग रही होती है कि वो जो इमोशंस है, वो जो फ्लो है, आप उसमें बहकर एक लूज शॉट खेल दें और फिर एक दो इनिंग वैसे चली जाए, फिर देन यू स्टार्ट टू डाउट योरसेल्फ। तो वो जोन में ना जाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जब बैट पे अच्छी लग रही है तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप और ज़्यादा फोकस से खेलें और ज़्यादा डिटर्मिनेशन से खेलें, ताकि फिर जो वो बैड जो एक दो तीन जो इनिंग आती है उसमें आप अपने आप को डाउट ना करने शुरू कर जाए। सब शॉट्स पे आपको काम करते रहना होता है, नहीं तो ओवर टाइम स्पेशली जब आप इतने ज़्यादा मैचेस खेलते हो और प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा चीज़ों पे काम करने के लिए प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट जो आपके पास जो आपका स्किल सेट है उसको मेंटेन करने की ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो आई थिंक इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, जब मैचेस बहुत ज़्यादा खेलते हो तो आपकी हल्की सी टेक्निक में ट्वीक्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने शॉट्स पे काम नहीं करते हो तो वो फिर बाद में थोड़ा 2, 3, 4, 5 महीने बाद थोड़ी आपको तकलीफ देते हैं। तो मुझे हर शॉट पे एटलीस्ट अगर मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ तो मुझे वो मेंटेन करना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है और फिर उस पर मैं काम करते रहता हूँ। कितना दिलचस्प होता है ना एक ऐसा स्पोर्ट जो बतौर एथलीट जैसे शुभमन गिल आपने पूरी जिंदगी खेला है, लेकिन आप कुछ दिन नहीं खेलते हैं या कभी कभी ज़्यादा खेल लेते हैं तो खुद शुभमन ने कहा कि आपकी टेक्निक में चिंक्स आने लग जाते हैं। आपके शॉट्स जिन्होंने आपको ताउम्र रन्स दिए हैं, सडनली वो शॉट्स आपको परेशानी देने लग जाते हैं। उन शॉट्स पर आपको लगातार काम करते रहना होता है, इसीलिए एक सफ़र होता है। ये एक मंजिल नहीं है कि आप आ गए, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, आपको रोज़ मेहनत करनी है, रोज़ आना है, रोज़ वो इटरेशंस करने हैं, रोज़ वो शॉट्स खेलने हैं, तभी वो रन्स आते हैं। और वो रन्स आए हैं शुभमन गिल के लिए। इट्स अ रिलीफ एज जॉर्ज सेड, बट मोर इंटरेस्टिंगली एंड it's a very interesting stat, George. 1996 was the last time when two under 25 batters scored a century for India in the same test. 1987 was when that happened for India in India. Ravi Shastri and Mohammad Azharuddin, I think, were the batters against Pakistan in Jaipur. It's been a while, and we might all be jumping the gun, but that's the kind of talent pool that India possesses right now. The future looks bright. Certainly, yeah. There is no dearth of batting talent coming through the ranks. There's, Gill and Jaiswal are here now. Sai Sudarshan has just scored runs against, the England Lions in a victory there. Sarfaraz Khan is there. Patidar, he's not as young as some of these other guys, but he's coming through the ranks. So the competition is tough for that Indian batting order. And with Gill and Jaiswal, you think, it's not very often that you get even one 10,000 run player. You think that these guys are 10,000 run players.
and so hopefully they will keep going from strength to strength, and yeah, be a strong part of this Indian squad for the next decade. That's the wish list. That's the wish list for every Indian cricket fan. But now to the more recent wish list, रोहन भाई, 399 रन कम नहीं होते. डे 4, डे 5 पर आपको 399 रन बनाने हैं, चेस करने हैं, कम नहीं होते. लेकिन ये इंग्लैंड टीम, इनकी ये बैसबॉल अप्रोच ये कर चुके हैं. ऐसा नहीं है इन्होंने करा नहीं है. और आज भी जिस तरीके से शुरुआत करी उन्होंने 67 पर 1 आई थिंक दिन खत्म करा है. बेन डकेट आउट हो गए हैं, लेकिन रेहान अहमद 9 रन बनाकर वहां पर हैं. जैक क्रॉली हैं. कहीं ना कहीं भारतीय टीम के मन में भी ये, उन्हें ये आशंका जरूर होगी कि ये ना ये चेस कर सकते हैं, क्योंकि ये करके आए हैं पहले. अब भारत के खिलाफ ही किया है भाई. 378 अगेंस्ट इंडिया एट एजबैस्टन, वही करके आए. सो ऑब्वियसली इंडियन टीम विल नो कि दिस टीम कैन वेरी वेल बी इन द टूर्नामेंट. जस्ट हैव अ लुक एट दिस. 2022 में ही हुआ है 378 फॉर 3 अगेंस्ट इंग्लैंड. देन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 362 स्कोर कर चुके हैं. 332 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगेन, बट दैट वाज 1928. दैट वाज वे बैक इन हिस्ट्री. बट दिस इंग्लैंड टीम इज डिफरेंट. हम सबको पता है कि in fact they like this kind of situations where they are pushed against the wall. उनको पसंद है कि ऐसे challenging situations में 4th innings में उनकी batting आए and they take up the challenge of chasing big runs. In fact under Ben Stokes himself, England have done really well. जब Ben Stokes ने अपनी कप्तानी संभाली उसके बाद एक नया approach लिया. Have a look at this. Under Ben Stokes' captaincy, they have done successful run chases, as we spoke about 378 against India. But the thing is, यहाँ पे conditions थोड़े अलग हैं. यहाँ पे Indian conditions हैं. इंडिया में आई डोंट रिमेंबर सच अ बिग स्कोर बिंग चेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि मतलब याद ही नहीं है कि पिछली बार कब जो है इतना जो है बड़ा स्कोर इंडिया में 4th innings में हुआ है. 2008, there you go. It was again India-England series. So, India-England series इंडिया में यार काफी अच्छे रिकॉर्ड्स बना के देती है हमें. बड़े रन बनते हैं. करेक्ट. कुछ तो है, कुछ तो इन दोनों टीम्स के बीच. And perhaps that is why, George, that apprehension, I'm pretty sure the fans have it as well. 2 questions to you. First, from whatever you've seen in the 3 days, are there enough demons in the pitch to really scare the English batters and for them going like, all right, some can really split, some can really turn, we don't know what's going to happen. And 2, from India's perspective, is just that England batting lineup's ability to change gears and shift them like they did yesterday with Ben Stokes batting, is that the biggest danger? So, good questions. I don't have the answers to them. The one thing I do know is that this test is probably going to end tomorrow, one way or the other. All right. Okay. If England lasts a day, they'll probably chase it down. Otherwise, they'll get all out. But one thing is, I don't think the pitch is doing as much yet. Tomorrow it could be a different story. After another morning session, after the rollers apply to it and all of that. So we'll have to wait and see what it does then. But it's definitely not doing as much as it did in Hyderabad yet. Which is why, I was kind of disappointed in the Indian batting today that they lost 7 wickets to Hartley and Rehan Ahmed when the bowling wasn't all that great. Anderson was outstanding in the morning, but, the England spinners, I thought India missed a chance to bat England out of the test. England are going to play in only one way. They have said time and again and proved it also that they do not fear losing, which must be a great place to be in the dressing room. You go and play without the fear of losing. So no one really expects them to win tomorrow. They have really nothing to lose. They're going to come and attack. So Rohit will have to keep his wits about him as a captain, and have a plan A, plan B, and figure out clever fields, smart bowling changes, because England are going to come hard win. और ये बात देखी है हमने रोहन भाई, जैसा जॉर्ज ने अभी भी कहा कि, और ये बार बार लगातार देखा है इंग्लैंड की तरफ से कि जब आपको लगता है कि दे आर बैक्ड इनटू अ कॉर्नर, बेन स्टोक्स एक ऐसी पारी खेल जाएंगे, 30 गेंदों में 60 रन के आसपास बना देंगे, सडनली पूरा मोमेंटम अपनी तरफ ले लेते हैं. तो ये चीज़ जहन में रखनी होगी डे 4 पे.
एक्चुअली इफ यू लुक अराउंड ट्विटर, इफ यू लुक अराउंड ऑल द कमेंटेटर्स, सब बात कर रहे हैं ना कि कितनी फियरलेस इंग्लैंड टीम खेल रही है, एंड कहीं ना कहीं इनफैक्ट इंडियन टीम विल वांट दैट मैन. इट्स अ ह्यूज टारगेट एट द एंड ऑफ इट. इट्स नॉट इजी. इंडियन विकेट्स पे ये आसान नहीं है, एंड इफ दे डू इट, इट्स गोइंग टू बी समथिंग रियली हिस्टोरिक. देन probably everything of how teams approach India in India, how test matches are played in India will probably change if England is able to achieve this, because India ने struggle किया यार, for if you remember in Hyderabad to chase in the fourth inning. So I'm not sure with this tactic whether England will be able to do it. We are all hoping, eternal optimist कि कुछ historical मैच हमें देखने को मिले, कुछ रिकॉर्ड्स बने. बट आई एम श्योर इफ इंडियन टीम नोज कि आखिरी के 2 दिन में किस तरह की गेंदबाजी होती है, और उनको पता है अच्छी तरह से, दे आर माहिर इन सिचुएशंस में. एंड द फैक्ट दैट यू हैव कुलदीप यादव आल्सो, हु इज अ लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, that brings in a different kind of an attack also, to go against all out attack against him, especially if the wicket is going to break up a little bit. ये मुश्किल होने वाला है काफ़ी. आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म अराउंड, बट वी शुड नॉट इतना यार, हमारे गेंदबाज भी काफ़ी तगड़े गेंदबाज हैं यार, उनको पता है कि इन विकेट्स पे कैसे निकालना है, खास करके इस सिचुएशन में जब इतना बड़ा स्कोर है. ये बात सही कही है रोहन भाई आपने कि भाई देखिए सब कुछ ठीक है, बेसबॉल बहुत अच्छा है, बहुत अटैकिंग क्रिकेट है, बट समझो यार इंडिया है, हमारे स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल. 332 रन बहुत दूर होते हैं, और भारतीय फैंस यही चाहेंगे कि वो 332 रन ना बने. और जैसा जॉर्ज ने कहा, वन वे और दी अदर, डे 4 को रिजल्ट आ रहा है. अगर इंग्लैंड पूरे 90 ओवर्स खेल गए, 4.79 के रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो या तो वो होने वाला नहीं है. कुलदीप, अश्विन, अक्षर, बुमराह, अश्विन, और नाम लेने की जरूरत नहीं, ये लोग कल काम करेंगे. आप हमें बताओ स्कोर लाइन क्या होने वाली है डे 4 पर, क्योंकि देखो डे 4 पर ये मैच खत्म होने वाला है. लेकिन फिलहाल आज हमारा वक्त खत्म हो गया है फॉलो द ब्लूज लाइव पर. बहुत बहुत शुक्रिया जॉर्ज का, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन देशमुख का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी. आपको एक और रिमाइंडर दे दें, ब्लूज, यंग ब्लूज अंडर 19 सेमीफाइनल में पहुंच गए. अंडर 19 वर्ल्ड कप के साउथ अफ्रीका के विरुद्ध खेलेंगे, अपना 6ठा टाइटल चेज कर रहे हैं. बिहाइंड द सीन्स मस्ती भी कर रहे हैं, उनसे हमने थोड़ी चर्चा करी, बातें करी, देखा कि क्या कर रहे हैं वो बिहाइंड द सीन्स. आप वो देखो. आपसे मिलेंगे कल यहीं 5 बजे. Bashir Khan, and we are all our friends are going to guess what he's going to do. Dancing on the song. That's Moe Moe was good. Oh, great. Going to enjoy these things. Watch our journey on Follow the Blue.